Hello children, today we will start our economics for class 11. Children, for many of you, those who are from the CBSE system, economics is a new subject in the sense that you have studied economics in class 9 and 10, but there you have studied applied part of economics and what economics is concerned with an economy. But here, when you are going to start your study of economics in class 11, you will start discussing theoretical aspect of economics, and pure economics you will be discussing in class 11, 12 and further. First of all, I must tell you one thing very clearly, that this subject economics is one of the best subject to study. This economics has a scope for further research and development. Considering its scope of further research, you see that apart from Nobel Prize in Natural Science and Peace, Nobel Prize is given for economics also. Why I'm telling you this all? Because you develop an interest in economics. First of all, you start loving this subject. The moment you love and you start loving your subject, you will devote your quality time on that subject. Before we go for a systematic study of the syllabus, what is prescribed for class 11, I must tell you that what are the topics which you are subject to go through in class 11. Actually, your economics of class 11 is divided into two parts. Number one part is micro economics, and number two part is statistics for economics. Number one is microeconomics and number two is statistics for economics. Now, in this microeconomics, that is the theoretical part of economics, you are supposed to discuss, you will start with introduction, then you will go for consumer behavior, then you will go for producer behavior, then you will go for market, and then you will go for market equilibrium. Okay, and don't think that only 5 topics are there, because subtopics are there under these 5 topics. And all those subtopics, when we start studying each and every topic in detail, you will come to know. Here in the statistics, what you are supposed to discuss, one is introduction, another is collection of data, then there is presentation of data, then there is analysis of data. In this analysis only you will discuss arithmetic, mean, median, mode, etc. Okay.
Now, then you discuss index number. Okay, so these are the certain topics which you are supposed to discuss in class 11 in microeconomics and statistics. Under these headings, there are subheadings, subtopics which you are supposed to discuss. Now, before we go for discussion of microeconomics or macroeconomics or statistics, whatever you say, first of all, we have to understand, what we have to understand is, what is this economics all about? Children, you develop interest in any particular object, any particular thing, when you got to understand that in detail. Until and unless you understand a particular thing, you remain uninterested about that particular thing. So here also, same thing. You have to be familiar with. You have to be familiar with the subject, what economics is, and from where this subject emerged. If you don't understand, if you are not familiar with the subject, you won't be able to develop an interest in this subject. When you go at higher level, you do start doing post-graduation in economics, you will have to study history of economic thought. That not that much detail, but little you have to learn here. What is this economics? So basic question arises. Basic question arises that this economics is what? ये है क्या? ये इकोनॉमिक्स कौन सी चीज है? ये क्या है इकोनॉमिक्स? दिस यू हैव टू स्टडी. चिल्ड्रन, economics is not very old subject. Comparatively, relatively, when you compare it with other subjects, other social science like history, like geography, like political science, okay, sociology, this is a new subject, comparatively. What you see economics these days, a separate discipline, a separate subject, a scientific subject. There are specified colleges, specified institutions which discuss what you say economics. In India, there is a special college for this, like Delhi School of Economics, when you can do your post-graduation there, and certain branches of graduation also are there. So, initially, it was not like that. What is Hindi of this economics? हिंदी सब इस इकोनॉमिक्स के लिए क्या है? हम इकोनॉमिक्स का मतलब भी पूछता है, इकोनॉमिक्स का मतलब हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र. इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है? अर्थशास्त्र. इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? इकोनॉमिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र. अब एक सवाल है यहाँ पे, आप सबने अर्थशास्त्र का नाम सुना है, अगर एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं तो एक पुस्तक के रूप में आपने इसका नाम सुना है. यू मस्ट हैव हर्ड नेम अर्थशास्त्र. दिस इज द नेम ऑफ ए बुक रिटन बाय, सब जानते हैं आप लोग, रिटन बाय, उन्हें कई नामों से जाना जाता है. आप उनको कहिए, आप उनको कहिए, चाणक्य कहिए, या उनको कहिए आप कौटिल्य कहिए. ओके, आपने टीवी पे सीरियल भी देखा होगा, ये चाणक्य सीरियल, जो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित करने वाले. उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र. ओके, तो आप कहेंगे कि भाई चाणक्य तो बहुत पुराने थे, फादर ऑफ
अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा। लेकिन व्हेन यू गो थ्रू दिस बुक, आप जब इस बुक को पढ़ेंगे, यू विल फाइंड दैट subject matter of this book अर्थशास्त्र is not what subject matter we get these days. जैसे आप अभी मैंने कहा ना, आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा, आपको मार्केट पढ़ना पड़ेगा, आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। आगे जाकर के 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये अर्थशास्त्र में इन चीजों का जिक्र नहीं है। अर्थशास्त्र जो किताब है उसमें जिक्र है, आप देखेंगे कि हर स्टेप पे चाणक्य ने ये साबित करने की कोशिश की है कि किंग जो होता है वो सुप्रीम होता है, किंग इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। और जो प्रीवी काउंसिल वाला जो फिलॉसफी है कि किंग कैन मेक नो मिस्टेक, ये यहाँ भी चरितार्थ होता है। चाणक्य ने भी इस किताब में इस बात की चर्चा की कि राजकाज कैसे चलाया जाए और राजा सुप्रीम होता है, दंड विधान क्या होता है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ पनिशमेंट। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज आई विश टू टेक यू टू द बैकग्राउंड फ्रॉम वेयर इकोनॉमिक्स इमर्ज्ड। चिल्ड्रन, as you see that even Chanakya or Kautil, who written Arthashastra, the subject matter of his book was not pure monetary things, was administrative. What I am trying to convince you all that initially ये जो इकोनॉमिक्स था, ये इकोनॉमिक्स जो था, ये Economics was not a separate subject. Economics was not a separate discipline. Actually, economics was the part of political science. ये इकोनॉमिक्स जो है ये पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा था, पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट था। और वो जो टाइम था, वो जो जिस काल में, जिस दौरान, द पीरियड ड्यूरिंग विच दिस इकोनॉमिक्स वाज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट पीरियड वाज इज नोन एज मोनार्की। दैट पीरियड इज नोन एज मोनार्की, मतलब राजतंत्र, राजा का शासन वहां बना हुआ था। राजा होगा, राजा का बेटा राजा होगा। और आपने पढ़ा है इंग्लिश लॉ जो प्रीवी काउंसिल का है, उसमें बेसिक एजम्पशन है किंग कैन मेक नो मिस्टेक, मतलब राजा ने किसी का मर्डर भी कर दिया तो ये माना जाता है कि राजा कोई गलती कर ही नहीं सकता है, किंग कैन मेक नो मिस्टेक। ये इसी सिद्धांत पे हम लोग चले आ रहे थे। ओके, so monarchy was the time in which this economics was the part of political science. Now आप जानते होंगे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि जो राजा थे, रजवाड़े थे, बड़े बड़े राजघराने थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपने ऐशो आराम पे सारा पैसा खर्च करते थे। टैक्स देता कौन था? Who were the taxpayers? General public citizens, they were taxpayers. जनरल पब्लिक जो था, जो सिटीजन्स थे, वो टैक्स पे करते थे। और वो जो टैक्स पे करते थे, उस टैक्स मनी को वैसे सिद्धांत है कि व्हाट एवर टैक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक, दैट इज टू बी स्पेंड ऑन द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। वहां उल्टा था, वहां क्या होता था कि ये जो किंग थे, ये जो बड़े बड़े राजा थे, वो क्या करते थे, टैक्स मनी को वो डाइवर्ट करते थे। किसके लिए? ये सेल्फ लग्जरियस लाइफ के लिए, ये अपने ऐशो आराम पे ये खर्च करते थे। अब देखो, ये जो सेल्फ लग्जरियस लाइफ था उन लोगों का, राजाओं का, तो भाई अगर मान लो प्रजा का पैसा है, प्रजा के भलाई पे खर्च नहीं किया जा रहा उस पैसे को, तो प्रजा तो अपोज करेगी। कोई ये देखने वाला तो होना चाहिए, कोई ये एक विषय तो होना चाहिए, सम वन सब्जेक्ट शुड बी देयर हु कैन एनालाइज दैट वेदर द किंग, द एम्परर्स, दे आर स्पेंडिंग दैट मनी इन प्रॉपर वे और नॉट।
or the finance, money which is of public, known as public finance. What is the use of this public finance by king? It is rational use or not rational use. Someone should see that. Okay, so king and emperors, they never desired, they never allowed any subject to develop. What? Any subject to develop which can ये चाहते नहीं थे कि कोई ऐसा सब्जेक्ट आए या कोई ऐसा एक्सपर्ट आए जो किंग्स एक्सपेंडिचर बिहेवियर जो था, किंग का जो एक्सपेंडिचर बिहेवियर था, वो चाहते नहीं थे कि इसका क्रिटिकल एनालिसिस हो सके. दे नेवर डिजायर दैट किंग्स बिहेवियर टू बी क्रिटिकली एनालाइज्ड. कभी नहीं चाहते थे. एंड दे नेवर अलाउड सच सब्जेक्ट टू प्रॉस्पर, दे नेवर अलाउड सच प्रोफेशनल्स टू प्रॉस्पर. और ये समय चलता रहा. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एज यू हैव डिस्कस्ड इन हिस्ट्री दैट ये जो राजा थे, नेचुरली अगर आप अपने ऐशो आराम में लगे रहिएगा, प्रजा की भलाई नहीं देखिएगा, तो क्या होगा, आप कमजोर होइएगा. यू विल लूज मास सपोर्ट, you will lose love and affection of mass people. Ultimately, you are ruling, people have not selected you, you have been imposed, but ultimately what will happen? There will be grumbling among the public, and आपने देखा है कि number of revolts are there in which whole system got changed, U-turn. Okay, so a new class emerged, and this new class is merchant class. This new class is merchant class. Okay, and from here a new era started to begin. Earlier, what was monarchy was there. Now, this monarchy was getting slowly replaced. Replaced by what? Replaced by mercantilism. This monarchy was getting replaced by mercantilism. एक नए merchant class आया. और now what happened? In the time of monarchy, there was laissez-faire. This is a completely controlled economy. Autarky was there. Means each and every province that was self-sufficient, and there was no role of international trade at all. But now this merchant class became dominating class. This financial power shifted from emperors or kings to this merchant class. They started to do international trade. They started to produce at large scale. Okay. Now they started to look for whom? Look for the experts. They started to look for experts. कैसे experts क्यों चाहिए थे इनको? कौन सा expert चाहिए था इनको? वो expert चाहिए था those who can analyze their trade behavior, जो उनके ट्रेडिंग बिहेवियर को एनालाइज कर सके. Who can suggest to minimize loss and to maximize profit. वो ऐसे एक्सपर्ट को खोज रहे थे जो उनको ये सलाह दे सके. क्या सलाह दे सके? भाई तुम कैसे अपना एक्सपेंडिचर तुम कैसे करो, तुम्हारा जो ट्रेड बिहेवियर है, तुम्हारा जो व्यापार करने का तरीका है वो कैसा है.
और इसको कैसे तुम इम्प्रूव और कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, एक ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत थी जो उनको बता सके कि ये अपने खर्च को कैसे, लॉस जो उनका है, घाटा जो है, लॉस को कैसे कम कर सके और अपने प्रॉफिट को वो कैसे बढ़ा सके, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। एक ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत। अब देखो, अभी वी ऑल आर सफरिंग ड्यू टू कोविड-19 and all over the world at global level, experts are engaged in developing vaccine and medicine to win over this COVID-19. From whom can we expect that they will develop vaccine or they will develop medicine? Can we expect from the student of economics like me? Can government expect from poets? Can government expect this vaccine to develop from artists? No. Only those who have studied medicine, those who have studied chemistry, those who have studied biology, okay, in different form, only they can contribute to this. तो ये जो यहाँ सेम थिंग है, ये जो मर्चेंट क्लास एक्सपर्ट्स को खोज रहे थे, तो उनको चाहिए था एक्सपर्ट, और वो एक्सपर्ट कौन होगा? जो एक्सपर्ट क्या पढ़ा होगा? जो एक्सपर्ट पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स को। देखो, वन थिंग आई वुड लाइक टू मेक क्लियर, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाए, आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बन जाए, आप एक्चुअरियल सर्विस में चले जाएं, आपको ये एक चीज जानना होगा कि जो मदर सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। चाहे वो मैनेजमेंट हो, इकोनॉमिक्स से आया, अकाउंट्स हो, वो इकोनॉमिक्स से आया। If you wish to be in the decision-making body of an organization, then you have to study economics. Accounts ये बताता है कि पिछले साल में पैसा कहाँ से आया, कहाँ खर्च हुआ, प्रॉफिट कितना रहा, नुकसान था। मैनेजमेंट से that what is the organization and how organization works. But economics say that what to do and what not to do. Economics gives guideline for all these activities. So it is you must understand that economics is the mother subject. If you don't have a proper understanding of economics, you can be a good accountant, you can be a routine manager, but you cannot be a good decision maker. If you have to become a good decision maker, then you have to have control over economics. तो ये जो मर्चेंट क्लास थे, ये सारे जो बिजनेस क्लास थे, उनको एक एक्सपर्ट की जरूरत थी, और वो एक्सपर्ट कहाँ से आता? जो इकोनॉमिक्स पढ़ता। और इकोनॉमिक्स कहाँ था? इकोनॉमिक्स तो छुपा हुआ था किस कहाँ पे? पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल साइंस में छुपा हुआ था इकोनॉमिक्स। ओके, तब वो खोजने लगे, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि मर्केंटलिज्म इज देयर, तो राजा पूरी तरह से चले गए थे। राजा पूरी तरह से नहीं गए थे, राजा थे, उनका प्रभाव कम हो गया था, लेकिन पावर तो था। और ये डरते थे लोग, हर कोई डरता था कि इसको अलग से रूप में हम एस्टैब्लिश करेंगे, और हम अगर बताना शुरू करेंगे कि व्हाट इज गुड एक्सपेंडिचर, व्हाट इज बैड एक्सपेंडिचर, हाउ रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड, तो राजा तो जेल में डाल के उनको फांसी दे देगा, फिर कौन बचाएगा मुझे? So this merchant class, as they become dominating day by day, they started to look for the expert. What expert who can suggest them? What to suggest? जो उनको बता सके कि क्या करना है, नहीं करना है। और उसी वक्त एक पर्सनालिटी का फिगर आया सामने में, और नाम है वो, I hope you all are familiar with this name. क्लास 9 से आप इस नाम को सुन रहे हो कम से कम। और जो बच्चा थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रखता है, IQ जीके में रखता है, थोड़ा सा ब्रॉड करना चाहता है नॉलेज, वो तो शुरू से रखा होगा। और वो नाम है
एडम स्मिथ। एडम स्मिथ आए सामने में, और ये पहले शख्स थे जिन्होंने एक किताब लिखी पॉलिटिकल साइंस से अलग। इनको प्रमोट किया उस वक्त के बिजनेस क्लास ने काफ़ी, और ये ब्रिटिश थे। आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में जो प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है, टर्शियरी स्टेज है इकोनॉमिक्स में, जो डिफरेंट काल हुए, उसमें ब्रिटिश इकोनॉमिक्स का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। इसका बेसिकली रीजन है कि यू विल फाइंड, यू ऑल may have studied in history in class 10 and 9, that industrial revolution taken place first of all in Europe and particularly in Britain, or when they started to produce at large scale and in systematic manner, then they felt need of proper management of that production activities. And that's why this economics emerged first in Britain and then later in different parts of the world. So Adam Smith was also a British economist. He written a book, and this book is very famous. Book is an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. An inquiry into nature and causes of the wealth of nations, इस किताब का नाम रखा हुआ। ओके, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इस किताब को पॉपुलरली ये किताब जाना जाता है, ये पॉपुलरली जाना जाता है किताब को, शॉर्ट फॉर्म में जो लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। इसको जानते हैं लोग वेल्थ ऑफ नेशंस के रूप। ओके, तो ये जो एक रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? एक किताबें लिखी गई, नेचर एंड इंक्वायरी इनटू द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी जो कंट्री का पैसा है उसके बारे में, पैसा के बारे में कोई किताब लिखा। पहली बार किसी ने ये जो पैसा पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा था उससे अलग करके किताब लिखा। पहली बार किसी ने हिम्मत दिखाई, someone dared to talk about this, किसी ने इस बारे में बात करने की हिम्मत दिखाई। ओके, और चूंकि हिम्मत दिखाई पहली बार किसी ने इस बारे में बात करने की, वो शख्स था एडम स्मिथ। तो देखो क्या है एडम स्मिथ के बारे में। ये किताब लिखी गई, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। कब? बहुत पुरानी किताब है। ये किताब लिखी गई थी, इट वाज रिटन इन द ईयर 1776। This book was written in the year 1776। अब देखो दो तीन चीजें, क्या तो क्या देख रहे हैं, दो तीन क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। पहला, for the first time a separate book was written on इकोनॉमिक्स। पहली बार इकोनॉमिक्स पे एक अलग किताब लिखी गई। फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट बुक was written on economics, number 1. Number 2, for first time economics got separated from पॉलिटिकल साइंस। क्या हुआ? पहली बार
किसी ने इकोनॉमिक्स पे एक सेपरेट किताब लिखी। पहली बार कि किसी ने ये पॉलिटिकल साइंस से अलग करके इकोनॉमिक्स को देखा, और यहीं से सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ economics began. From here only, systematic study of economics began. So what we see that ये पहली बार किसी ने इस पे बारे में किताब लिखी, पहली बार इसको पॉलिटिकल साइंस से अलग करके देखा, और यहीं से सिस्टमैटिक स्टडी इकोनॉमिक्स का स्टार्ट हुआ। और यह सब किसके कारण हुआ? Who is responsible for this? And the person is Adam Smith. Adam Smith. So Adam Smith is the person who for the first time written a separate book on economics. Adam Smith is the person who for the first time dared to segregate economics from political science. Adam Smith is the person who started a systematic study in economics. That's why we say, we call what? क्या बोलते हैं Adam Smith को हम लोग? That's why Adam Smith is known as father of Adam Smith is known as the father of economics. So you all must be knowing, all of you must be knowing, or if you don't know, then you come today, you know that Adam Smith is the father of economics. Now question arises, why? We have what? For the first time he written a separate book on economics. Second, he segregated economics from political science. Third, with him only a systematic study of economics got started. Okay, तो यहाँ से इकोनॉमिक्स का सिस्टमैटिक स्टडी स्टार्ट होता है, और इन सब कारणों से एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। डोंट फॉरगेट दिस चिल्ड्रन। वैसे भी जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होनी चाहिए, क्योंकि योर पर्पस इज नॉट टू पास एग्जामिनेशन ओनली, योर पर्पस इज टू ब्रॉडन योर नॉलेज, एंड यू आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, whether you are in science or commerce. If you are studying economics, you will go for management, you will go for higher study. There, if you wish to excel in your career as an employee or as an employer or as a professional, what you need? You need to have broadened knowledge base. You should have the capability to discuss. You should have capability to rationalize anything. You should have capability to logically explain anything. And this power of logical explanation, rational explanation, you can do only if you enhance your knowledge. आप कल कमीशन की तैयारी करेंगे सिविल सर्विसेज का, वहाँ भी ये काम देगा सारी चीज़ें, इसलिए पढ़ो। जैसे बहुत सारे सिलेबस के पोर्शंस को कट किए गए हैं सीबीएसई के द्वारा, माइनर कट किए गए हैं, बट आई हैव इंस्ट्रक्टेड ऑल माय टीचर्स दैट नहीं, आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाओ बच्चों को। वी हैव टाइम, डोंट वरी, वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन बोर्ड, वी हैव टाइम, योर टीचर्स are teaching you in online mode, so need not to worry. Okay, so what we see, when systematic knowledge of economics started and Adam Smith did this, then now we have to study definition of economics, how economics is defined, how economics is explained. Okay, so first of all go through this economics. This economics, actually this word economics is derived from two Greek words. Experts are having different opinion about this. Few say that it is derived from eco and nomos.
eco and nomos. Okay, eco stands for will and nomos for science. You say that it is derived from eco, eco and naming. Eco means household and naming means management. Okay, so what we see that this economics is derived from two words, that is eco and nomos or eco and nomos naming. There is a difference among the experts regarding this. But the thing is, when properly we define economics, so Adam Smith went through the vocabulary meaning of economics. Okay, Adam Smith defined economics. Adam Smith defined economics as the science of wealth. Okay, so we have to discuss the definition of economics under three heads. One is wealth definition. Wealth definition, it is given by Adam Smith. Number one is wealth definition given by Adam Smith. Number two is welfare definition given by Alfred Marshall. Number three is scarcity definition given by Lionel Robbins. Scarcity definition given by Lionel Robbins. And one more you can add. Actually, this one is the summary of all. But for the sake of study, that is modern definition. Actually, this modern definition is nothing new. It is actually a mixture of these three. So we will explain this modern definition only when we explain all these three. Because if we don't understand these three, it will be difficult to understand this modern definition also. So let this modern in suspended mode, first of all, understand the wealth approach, the welfare approach, and this scarcity approach, then modern approach. This modern approach is given by, his name is P, means Paul, A, Anthony Samuelson, P.A. Samuelson. Okay, right now this is not very important. First of all, go through these three. Okay, so first approach we see this wealth definition given by Adam Smith. Adam Smith ने क्या कहा? Adam Smith ने बहुत सिंपल शब्दों में कहा, भैया ये इकोनॉमिक्स है, उन्होंने कहा कि अपनी किताब में, कौन सी किताब? वेल्थ ऑफ नेशंस में क्या कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ. ये इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है. ओके, 1776 में एडम स्मिथ ने ये चीज कहा था, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक्स जो है यह धन का विज्ञान है. ओके, उन्होंने फर्दर कहा कि मनी इज द हब around which all
human activities revolve. मनी इज द हब अराउंड विच ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज रिवॉल्व। उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये इकोनॉमिक्स जो है ये धन का विज्ञान है, नंबर एक। नंबर टू, ये जो पैसा है, धन है, उसी के चारों ओर जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो घूमते हैं। ओके, इन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ओके, और बहुत दिनों तक यही कॉन्सेप्ट चला कि इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है, और ये जो पैसा है, धन है, भारत के रूप में रुपया, तो इसी के चारों ओर हमारी जो क्रियाएं हैं घूमते रहती हैं। मतलब क्या, उन्होंने कहा कि एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज इज टू अर्न वेल्थ। ओके, एंड एक्टिविटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटी इज टू अर्न वेल्थ। क्या कहा कि धन का विज्ञान है, और ये सभी की जो अंतिम लक्ष्य है वो पैसा कमाना ही। तो हुआ क्या कि कुछ दिनों तक तो चला, लेकिन उस काल में जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जो थिंकर्स थे, उन्होंने इस डेफिनेशन को अपोज किया। उन्होंने अपोज किया और कहा कि देखो भाई, आपने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, और आप वेल्थ को बोल रहे हैं कि अर्थशास्त्र जो है यह धन का विज्ञान है। तो क्या कर रहे हैं आप? तो स्ट्रेस ऑन वेल्थ, आप सिर्फ धन पे स्ट्रेस डाल रहे हो। यू आर स्ट्रेसिंग ऑन वेल्थ ओनली, नंबर वन। यू आर स्ट्रेसिंग ऑन वेल्थ ओनली, ये पहली बात कि आप सिर्फ और सिर्फ धन की बात करते हो और नहीं कुछ। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई देखो, यू आर एज्यूमिंग ऑफ एन इकोनॉमिक मैन। आप एक ऐसे इकोनॉमिक मैन की कल्पना कर रहे हो जिसके पास सिर्फ पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखो मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूं तुमको। वन, सपोज यू आर स्टडिंग कॉमर्स और इकोनॉमिक्स एंड यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, और यू हैव डन MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद, ओके, और हार्वर्ड। नाउ यू हैव टू job options. Okay, one job option offers you that okay, you will be at your hometown. आप अपने जो जहाँ पढ़े लिखे पैदा हुए वहाँ रहेंगे आप, और वहाँ रहने के बाद आप काम कीजिए और आपको सपोज 5 लाख रुपया महीना सैलरी मिल जाएगी। अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने परिवार के साथ रहिए और पैसा कमाइए। दूसरा ऑफर है कि देखो भाई, आपको एक आइसोलेटेड आइलैंड पे जाना पड़ेगा। यू विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन एन आइसोलेटेड आइलैंड, नो वन विल बी देयर, इंटरनेट कनेक्टिविटी विल बी देयर, एंड फूड विल बी सप्लाइड टू यू, एंड यू रिमेन अलोन देयर, एंड फॉर 5 years you have to work there, and after 5 years you will be getting opportunity to come and meet your family again. You have to go after 5 days, और आपको 10 लाख रुपया मिलेगा। मैं समझता हूं कि एक जो रैशनल पर्सन जो भी होगा वो क्या बोलेगा कि नहीं भैया, मैं अपने घर पे ही काम करूंगा। तो एक्सपर्ट ने कहा कि देखो, ये जो इकोनॉमिक मैन की कल्पना है, ऐसी बात नहीं है। ओके, तीसरा उन्होंने कहा कि देयर आर अनएथिकल वेज, देयर आर अनएथिकल वेज through which money can be earned. There are unethical ways through which money can be earned. बोला कि देखो, बहुत सारे अनएथिकल वेज हैं जिससे कि आप पैसा कमा सकते हो। ये अच्छी बात नहीं है। उसको इकोनॉमिक्स अगर ये प्रोमोट करेगा, गैम्बलिंग है, पैसा कमा सकते हैं आप, रॉबरी है, पैसा कमा सकते हो आप, प्रोस्टिट्यूशन है, पैसा कमा सकते हो आप। तो अगर इन सब चीज़ों से पैसा कमाओगे और इकोनॉमिक्स उसको प्रोमोट कर देता है, इकोनॉमिक्स says yes, it's okay, then economics will become unpopular in due course of time. तो उन्होंने कहा कि एडम स्मिथ के अनुसार क्या था, एडम स्मिथ के अनुसार क्या था कि जो ये मनी जो है, ये मनी
मीन्स भी है और ये मनी एंड्स भी है। ये मनी क्या है? मीन्स भी है और ये मनी एंड भी है, मतलब ये पैसा साधन भी है और साध्य भी है, जिसे लोगों ने नकार दिया। इन लोगों ने कहा कि नो, इन लोगों ने कहा, जो थे उन्होंने कहा कि मनी इज मीन्स ओनली, जो ये पैसा है वो साधन सिर्फ है, साधन मात्र है, ये साध्य नहीं है। पैसा, मनी इज मीन्स ओनली, नथिंग एल्स, ये एंड नहीं है। पैसा सिर्फ और सिर्फ साधन है, साध्य नहीं है। और इसीलिए एडम स्मिथ के डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया और यहाँ तक बोल दिया दिस इज रबिश, इकोनॉमिक्स विल बिकम अनपॉपुलर, पीपल विल नेवर एक्सेप्ट इकोनॉमिक्स। उसी समय एक दूसरे वाला क्या देखे, वेल्थ अप्रोच, एक दूसरे इकोनॉमिस्ट का उदय हुआ, क्योंकि एडम स्मिथ ने शुरुआत कर दी थी और लोग पीछे लग गए। और दूसरे इकोनॉमिस्ट जो थे, एक्चुअली ही वाज फॉलोवर ऑफ मार्क्स, एडम स्मिथ ओनली, he was follower of Adam Smith only, and he was Alfred Marshall, जिन्होंने कि वेलफेयर डेफिनेशन को प्रपोज किया था, जिन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन को प्रपोज किया था, उनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल, ए मार्शल। देखो, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी इकोनॉमिक्स के फील्ड में, फेमस पर्सनालिटी अल्फ्रेड मार्शल। जब तक वो जिंदा रहे, जब तक वो जिंदा रहे और तब तक इकोनॉमिक्स में जितने भी थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स डेवलप हुए, वो अल्फ्रेड मार्शल के बिना नहीं हुआ। सब में अल्फ्रेड मार्शल का कंट्रीब्यूशन है। आप जो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 में पढ़ोगे, उस माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आप पढ़ोगे कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोड्यूसर बिहेवियर, मार्केट, ये सारा कॉन्सेप्ट मार्शल का दिया हुआ है। When we were a student like you all, we used to say, देखो मार्शल साहब आलू हैं, उसका आलू का चोखा बना लो, आलू का सब्जी बना लो, आलू को मटन में डाल दो, आलू को खीर में डाल दो, जहाँ डाल दो उसी का टेस्ट ले लेता है, उसके बिना काम नहीं चले। तो मार्शल ग्रेट इकोनॉमिस्ट, एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट, और वो कैसे जो उन्होंने एक रास्ता दिया इकोनॉमिक्स को, जो उन्होंने जो एक ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात उन्होंने की कि भाई इकोनॉमिक्स कोई सब्जेक्ट कैसे इंपॉर्टेंट हो, कोई सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट तभी हो जब वो ह्यूमन वेलफेयर में वो कंट्रीब्यूट करे। तो उन्होंने कहा कि एडम्स डेफिनेशन इज नॉट रॉन्ग, इट इज इनकम्प्लीट। He very honestly said that Adam Smith's definition is not wrong, but it is, we can say that it is incomplete. So, how did he complete it? So, listen, see, definition of economics. Many things you have studied at class 9 and 10, and many things you will be studying in class 11, 12, and graduation, post-graduation. They origin from here only. ये जो आप हमारे अमर्त्य सेन का नाम सुना होगा, जिनको कि इंडियन ओरिजिन के हैं, ही गॉट नोबेल प्राइज, गॉट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। अब तो हमारे अभिजीत बनर्जी भी हो गए, उन्हें भी नोबेल प्राइज मिला है। लेकिन अमर्त्य सेन का तो डायरेक्टली जो उनका फैट थ्योरी है, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी, जिनपे कि उन्हें नोबेल प्राइज मिला, वो डायरेक्टली वेलफेयर इकोनॉमिक्स से अटैच्ड है। और जो अभिजीत बनर्जी और आर्थर डफलो को जो मिला नोबेल प्राइज लेटेस्ट इकोनॉमिक्स में, वो भी देखिएगा कि वेलफेयर से ही कंसर्न है। आप अपनी किताब अगर पढ़िएगा, अगर जिसमें उन्होंने जिक्र किया है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, अच्छी किताब है, पढ़ सकते हैं, आप सब पढ़ सकते हो उस किताब को, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। ये अभिजीत बनर्जी और आर्थर डफलो, जो उनकी पत्नी है, दोनों को ज्वाइंट नोबेल प्राइज मिला, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। आप देखिएगा कि उसमें भी जो उनका एंड ऑब्जेक्टिव है वो वेलफेयर ही है। ओके, तो मार्शल ने जब किताब लिखी अपनी, और उन्होंने एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज नहीं किया, उन्होंने कहा कि स्मिथ्स डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट, इट हैज टू बी कंप्लीटेड। ओके, क्योंकि एडम स्मिथ ने वेल्थ की बात की, उन्होंने वेलफेयर की बात नहीं कही।
मार्शल ने कहा कि वेल्थ और वेलफेयर जो दोनों है वो एक ही सिक्का का दो पहलू है। वेल्थ और वेलफेयर बोथ आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। एक तरफ वेल्थ है, दूसरी तरफ वेलफेयर है। अगर वेल्थ सिर्फ है, वेलफेयर नहीं है, तो नथिंग इज देयर। इफ वेलफेयर इज देयर, वेल्थ इज नॉट देयर, नथिंग इज देयर। तो क्या कहा उन्होंने, देखो उन्होंने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को। उन्होंने कहा एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, एक बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उन्होंने इकोनॉमिक्स का दिया। क्या कहा उन्होंने, कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस। पहली चीज क्या कहा, साइंस है। साइंस विच स्टडीज all such normal behavior of mankind, which studies all such normal behavior of mankind through which they make direct earning and are able to gain material welfare and are able to gain material welfare. Okay, he said on the one hand, economics is the study of wealth, whereas on the other hand, it is a study of human welfare. ओके, देखो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है अल्फ्रेड मार्शल का। उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल इकोनॉमी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, वो बिहेवियर जिससे कि डायरेक्ट अर्निंग होती है। ओके, और ये कैसा अर्निंग, जिससे कि मटेरियल भी होता है। और क्या कहा, पहली चीज, पहली बात उन्होंने क्या कहा कि ये इकोनॉमिक्स एक साइंस है। ये पहली बात उन्होंने कही, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। दूसरी बात उन्होंने कही कि नॉर्मल बिहेवियर को ये स्टडी करता है, ठीक है। तीसरी बात उन्होंने कही कि डायरेक्ट अर्निंग होता है। क्या होता है, डायरेक्ट अर्निंग होता है। ओके, फिर चौथी बात उन्होंने क्या कही कि ये ह्यूमन वेलफेयर को कंसेप्ट। ओके, देखो क्या कहा मार्शल ने कि इकोनॉमिक्स जो है वो मनुष्य के सभी नॉर्मल एक्टिविटीज का स्टडी करता है। पहला तो क्यों मार्शल को कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें, आई एम रीडिंग दिस डेफिनेशन। इसको लिखना है, वो पॉज करके, वीडियो पॉज करके लिखोगे, फिर आगे बढ़ो। वीडियो इज वेरी लेंथी एंड आई बिलीव इन दैट एक बार में नहीं देख सको पूरा वीडियो, पूरा लेक्चर, तो 2 बार में देखो, 3 बार में देखो, 4 बार में देखो। अब छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा तो परेशानी है कि आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा, आपका एक कंटिन्यूटी टूट जाती है। तो कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए थोड़ा लंबा बनाना पड़ता है। ओके, छोटा छोटा बनता है, वो जो यूट्यूब वाले होते हैं वो जुटका की रहता है कि मेरा व्यूअरशिप बढ़ जाए। यहाँ पर्पस है मेरा कि आप समझ जाए।
ओके, क्योंकि आप मेरे सामने में नहीं हो, मैं आपके सामने में नहीं हूँ, वर्चुअल मोड, वी आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर इन वर्चुअल मोड, सो वी आर वेटिंग कि कब आप मेरे सामने आएंगे और हम लोग फिर फेस टू फेस स्टडी करना शुरू करें। दैट्स व्हाई वीडियो विल बी लिटिल बिट लेंथी। देखो क्या कहा, पहला कि इकोनॉमिक्स जो है वो नॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करता है। क्या करता है? नॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करता है। ओके, अब देखो भाई, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट ही तुम्हारे बिहेवियर को स्टडी नहीं करेगा तो तुम आज के बाद तो कम से कम एबनॉर्मल बिहेवियर बंद कर दो। उन्होंने ये कोई क्राइटेरिया नहीं दिया कि ऑन व्हाट बेसिस ह्यूमन बिहेवियर कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। ओके, कोई क्राइटेरिया नहीं दिया, लेकिन कहा, एग्जाम्पल दिया कि जैसे बहुत ज्यादा कंजूस, जो माइजर, दोज हु आर वेरी माइजर पर्सन, कंजूस, वो एबनॉर्मल बिहेवियर। बहुत ज्यादा खर्चीला, वो भी एबनॉर्मल बिहेवियर है। lunatic person, those who are under influence of any toxicant, alcohol or any other form of toxicant, their behavior is abnormal behavior. उन्होंने कहा कि बिहेवियर ऑफ सेंट एंड सेज, जो साधु महात्मा जो हैं, उनका बिहेवियर एबनॉर्मल बिहेवियर है। These behaviors are not subject to study in economics, not the subject matter of economics, in fact, he said. Okay, so according to him, only normal behavior is the subject matter of economics. कैसा normal behavior? कैसा normal behavior? वैसा normal behavior जिसके थ्रू डायरेक्ट अर्निंग की बात हो, जिसके थ्रू डायरेक्ट अर्निंग की बात हो, वैसा नॉर्मल बिहेवियर थ्रू विच यू कैन मेक डायरेक्ट अर्निंग। ओके, जिससे आप डायरेक्ट अर्निंग कर सकें, वैसा बिहेवियर चाहिए आपको, दैट इज द नॉर्मल बिहेवियर। ओके, तो आप क्लास 9 में समझोगे, 10 में समझोगे, all human activities which are performed to make direct earning. All human activities which are performed to make direct earning are known as economic. So all human activities which are performed to make direct earning, जो डायरेक्ट अर्निंग के लिए जिस ह्यूमन एक्टिविटीज को किया जाता है, दोज एक्टिविटीज आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आई विल गेट सैलरी फॉर दैट, ओके, दैट इज माय इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर एक डॉक्टर हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं, अभी तो वही भगवान के रूप में डॉक्टर्स हैं इस कोरोना काल में, वो जो अपने पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ठीक कर रहे हैं, वो डायरेक्ट पैसा मिलेगा उनको, उसके लिए सैलरी मिलेगी, वो क्या हुआ? तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर मैं अपने बच्चे को अपने घर में पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग माई ओन सन एट होम, ओके, इफ आई एम टीचिंग माई सन एट होम, आई एम सेविंग मनी, मैं पैसा बचा रहा हूँ। हैड आई नॉट टॉट हिम, आई वुड हैव टू हायर a teacher for him, and that teacher would have asked money from me. But what I am doing, I am teaching myself, I am saving that money. But directly I am not earning, indirectly I am able to save. Directly I am not earning. So when I teach my son at home, that is non-economic activity. Okay, so doctor, if he is treating his family member at home, that is not an economic activity, because there is that activity is not for direct earning. So all human activities which are performed to make direct earning, that are known as economic activity. अब याद आया, आपने जब 10 में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा, आपने 9 में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा, उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? ये मार्शल के समय में ही, मार्शल ने ही उसकी चर्चा की। तो क्या कहा कि डायरेक्ट अर्निंग, तो पहला नॉर्मल बिहेवियर, दूसरा क्या बोला कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे।
क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। और तीसरा उन्होंने कहा ह्यूमन वेलफेयर। थर्ड थिंग ही टॉक अबाउट ह्यूमन वेलफेयर। क्या वो सारा चीज जिससे कि लोगों का भला हो, ह्यूमन वेलफेयर हो, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, सो व्हाट आर द थ्री मेन? पहला कि नॉर्मल इकोनॉमिक बिहेवियर, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। नंबर टू इकोनॉमिक बिहेवियर, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? Such activities through which we make direct earning, that is economic activity. And third, human welfare. देखो यही से क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं 2-3 बन जाता है। अब क्या कहा, जब मार्शल ने नॉर्मल बिहेवियर की बात की तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एबनॉर्मल बिहेवियर भी होगा ही होगा। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात की तो नॉन इकोनॉमिक तो होगा ही होगा। जब उसने ह्यूमन वेलफेयर की बात की तो नॉन वेलफेयर की बात तो होनी ही होनी है। ओके, तो क्या है, मार्शल ने क्लासिफाई किया है ह्यूमन बिहेवियर को, क्या? इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक बिहेवियर के रूप में, फिर नॉर्मल एबनॉर्मल बिहेवियर के रूप में, फिर कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन वेलफेयर, नॉट कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन वेलफेयर। तो एक क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, हु हैज गिवन क्लासिफिकेटरी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? हु हैज गिवन, ये तो सिंपली बोल दोगे वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया, तो भैया एडम स्मिथ हैज गिवन। वेलफेयर डेफिनेशन, हु हैज गिवन वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? दिस अल्फ्रेड मार्शल हैज गिवन। बट हु हैज गिवन क्लासिफिकेटरी डेफिनेशन? अल्फ्रेड मार्शल हैज गिवन क्लासिफिकेटरी डेफिनेशन। व्हाट यू सी हियर, Alfred Marshall has given classificatory definition. Okay, clear? Now, even Marshall was criticized, though many thousands of economists they developed their career studying Marshall's economics, and still Marshall's economics is most relevant. Still, it was criticized. Why it was criticized? It was criticized on the ground that what Marshall said, that economics is science. When he said economics is the science, people say yes, okay, economics needs to be established as a science. But thing is, if you say a particular subject as science, then science is nothing concerned with welfare. Science is concerned with what and how. That's it. What and how and why. That is like in physics, you study that if there is nuclear fusion or if there is nuclear fission, then mass energy will be generated. In physics, we have discussed, learned that when there is nuclear fission or nuclear fusion, mass energy will be generated. Now, whether this energy is used to generate power, electricity, or this energy is used to produce atom bomb to destroy countries, it is on us. Have you seen that physics as a science suggests? Physics as a science suggests that देखो भाई न्यूक्लियर फ्यूजन से मास एनर्जी क्रिएट होगा, एटम बम मत बनाना, पावर जनरेट करना इससे, नो। Physics is not concerned with it. Physics is concerned that it happens. That's it. Nothing else. Okay. Number two. So on one ground they criticized Marshall that on the one hand you say that economics is the science of wealth, but on the other hand you are not establishing it as a science. Then some people say you have classified human behavior into normal and abnormal behavior. लेकिन
you have not given any basis of classification, of human behavior. Basis of classification of human behavior. They said, okay, you have classified human behavior into economic, non-economic behavior, normal, non-abnormal behavior, but you have not given any basis on which human behavior is classified into normal and abnormal behavior. So, you should provide the basis on which human behavior should be classified. So on this ground also, economics of Marshall, his definition has been criticized. And third basis on which it has been criticized, they say that you have narrowed down the subject matter of economics. You have narrowed down the subject matter of economics means कि देखिए आपने what you said कि देखो भाई only normal behavior will be studied, only economic behavior will be studied, okay, only material welfare will be studied. So while doing this, normal only, abnormal not, economic only, non-economic not, material welfare only, non-material welfare not. So you are narrowing down the subject matter of economics, and economics will become a narrow subject. Okay. So they say no, this is wrong, and this definition is not complete, and they criticized. Okay, in fact, one of the disciples of Marshall, in fact, and he was a junior of Marshall, he said definition given by Marshall is rubbish, and he given a new dimension to economics. Okay, and what is this new dimension? That is scarcity, definition given by L. Lionel Robbins. He written his book, a very famous book is Dynamics of Economics. His very famous book is Dynamics of Economics, in which he defined economics, and in that book only he criticized Marshall also, and he tried to establish economics as a science. You must be remembering one question, and if you don't, I am reminding you. In geography also a question was there, and in economics also, class 10 a question was there, and that question was very important for board examination also. Question was, Earth has enough resources to satisfy the need of all, but not the greed of even one. यानी धरती पे काफ़ी साधन है जिससे आवश्यक ज़रूरत जो है वो सबकी पूरी की जा सकती है, लेकिन लालच किसी एक का भी पूरा नहीं किया जा सकता। आपके ज्योग्राफी में भी था ये क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन था, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, और ये यहीं से आया, रॉबिन्स से ही उसका वो क्वेश्चन उठा। क्या है भाई, रॉबिन्स ने क्या कहा? डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो किताब इनकी है, फेमस बुक, उसमें इन्होंने क्या डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को? तो इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स स्टडीज all such human behavior through which they try to satisfy their unlimited wants through limited
available means, through limited available means, which can have alternative use। ओके, मैं थोड़ी देर के लड़कियां हूं, उसको लिखना है वो पॉज कर ले वीडियो को, और वीडियो पॉज करके लिख सकता है। ओके, नाउ रॉबिन्स ने एक नए इकोनॉमिक्स के एक नए एरिया को जन्म दिया और कुछ बेसिक फैक्ट्स उन्होंने बताए। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि देखो भाई, इकोनॉमिक्स जो है ये मनुष्य के उन सारी क्रियाओं का अध्ययन करता है जिसके द्वारा क्या करता है, वो अपने जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उसको, जो लिमिटेड मीन्स जो है उसके द्वारा पूर्ण करने की कोशिश करता है और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करने की कोशिश करता है। तो रॉबिन्स ने क्या बातें कही? देखो, रॉबिन्स ने जो बातें कही हैं, ये इकोनॉमिक्स में एक, अगर वेलफेयर इकोनॉमिक्स अगर है मार्शल का, तो मार्शल के वेलफेयर इकोनॉमिक्स को भी एस्टैब्लिश करने में रॉबिन्स का ये थ्योरी बहुत ही कारगर है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, रॉबिन्स ने कहा, पहली चीज, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। बिल्कुल ये सत्य है, वांट्स आर अनलिमिटेड, इसका कोई अंत नहीं है, वांट्स का कोई लिमिट नहीं है। दीज आर कंप्लीटली अनलिमिटेड इन नेचर। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बोर्ड पे लिख रहा हूं, मेरे दिमाग में काश डिजिटल बोर्ड होता, बार बार इसको डस्टर से मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती, डिजिटल बोर्ड आ गया। फिर होता काश ये थोड़ा सा ये लाइटिंग सिस्टम इम्प्रूव हो जाता, बच्चों को बढ़िया दिखता, आ गया। फिर होता काश एयर कंडीशन रूम होता, ये जो पसीना भीगा हुआ हूँ ये पसीना नहीं चलता, आ गया। फिर होता काश एक जो कैमरा है वो एकदम डिजिटल कैमरा होता, फोटो बड़ा अच्छा दिखता, एकदम परफेक्ट क्लियर होता, आ गया। फिर होता काश ये मैं बोलता जाता और लिखते जाता, अपने आप टाइप होता जाता, बना बनाया लेक्चर मिल जाता है, बच्चे सामने होते। मतलब कि आपके वांट्स का कोई अंत नहीं है, एक वांट सेटिस्फाई, दूसरा वांट रीइमर्ज। पढ़ेंगे आगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। फिर उन्होंने कहा, मीन्स टू satisfy human wants are limited। मतलब कि जो हमारे साधन हैं, हमारे जो मीन्स हैं वो सीमित मात्रा में है। तो भी परेशानी नहीं थी, परेशानी तो भी नहीं थी। मान लो कि सीमित साधन था और मेरे पास 10 रुपया था और हम लिखा रहता है 10 रुपया में आपको चौक मिलेगा, मैं जाके चौक ले आता। आगे पढ़ेंगे इन चीज़ों को हम लोग, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वहाँ पढ़ने में समझ में आएगी हम लोगों को बात। क्या कहा? मीन्स टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, कि साधन सीमित है आपके। परेशानी तब भी नहीं थी, तो परेशानी कहाँ खड़ी हो गई? परेशानी खड़ी हो गई यहां, मीन्स कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। जो हमारे साधन है उसका ऑल्टरनेटिव यूज हो सकता है। मेरे पास अगर 100 रुपया है, मैं उससे किताब भी खरीद लूँ, या नाश्ता कर लूँ, या कोल्ड ड्रिंक्स पी लूँ, मूवी देख लूँ, कुछ भी कर सकता हूँ।
ऑल्टरनेटिव यूज है। तो मार्शल ने कहा, रॉबिन्स ने कहा कि देखो भाई, इकोनॉमिक्स जो है ये सिर्फ देखता है क्या कि कैसे मनुष्य अपने असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित साधनों के द्वारा करता है। यही इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है, इससे ना कम ना इससे ज्यादा। ओके, और वेलफेयर से रॉबिन्स इकोनॉमिक्स को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये साइंस है। ओके, जैसे कि मार्शल ने जो कहा कि नहीं नहीं वेलफेयर से ही मतलब है, वो नहीं है। जैसे तो वो एक एग्जांपल देता हूँ। सब लोग गेम खेलते होंगे मेरे ख्याल से, अभी तो नहीं खेल रहे होंगे, घर बंद हो गए, लेकिन पबजी वाले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पबजी को मैं गेम नहीं मानता हूँ, पबजी एडिक्ट है, प्लीज उससे बाहर निकल जाए पबजी एडिक्शन से। ये ऑनेस्टली 3-4 दिन पहले मैं देख रहा था कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा था स्कूल के चैनल पे, तो देखा कि सजेशन आया पबजी गेम खेल रहा था कोई देखने का। मैं देखा कि भाई पबजी सुनता हूँ, आज देखूँ क्या है ये। ऑनेस्टली बिलीव मी, फॉर 5 minutes आई वॉच्ड, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस। सब एक दूसरे को मार रहा है, गोली मार रहा है। भाई इफ यू आर लर्निंग दिस दैट शूट एंड किल ईच एंड एवरीवन, देन गॉड नोज व्हाट विल हैपन। सो गेम खेलता हुआ मेरे ख्याल से वैसे हमारा नेशनल गेम कुछ और है, और हम लोगों को क्रिकेट क्या है, मानते हैं कि ये गॉड गेम है। तो क्रिकेट में 2 बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। एक होता है क्रिकेट कोच, और दूसरा होता है क्रिकेट अंपायर। एक होता है क्रिकेट कोच और एक होता है क्रिकेट अंपायर। अब देखो, ये जो क्रिकेट कोच है, अगर मान लो कि इंडिया का जो बॉलर है, मान लो बुमराह है, और वो बॉलिंग करता है बॉल पे, और क्रिकेट कोच देख रहा है उसके बॉल को, तो क्रिकेट कोच बोलता है ना कि बॉलिंग किया, देखो ये बॉल जो है, सपोज कि बैटिंग कर रहा है कोई सामने वाला, बुमराह ने बॉल, और 2 लोग खड़े हैं वहां पे, एक अंपायर भी खड़ा है और बुमराह और कोच भी खड़ा है, और बुमराह अपील करता है। अपील क्या करते हैं हम लोग, हाउ इज दैट? अगर मान लो उसके पैड पे लग गया बॉल, बैट्समैन के पैड पे, तो बुमराह को लगता है कि ये लेग बिफोर विकेट है, तो क्या करेगा, हाउ इज दैट? तो जो क्रिकेट का अंपायर है वो क्या बोलेगा, आउट या नॉट आउट? क्या बोलेगा, आउट या नॉट आउट? यही बोलेगा वो, आउट है, नॉट आउट है। लेकिन अंपायर जो कोच उसका देख रहा है, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, ये किसी का आंसर करेगा, ये व्हाट इज का आंसर करेगा, ये व्हाट इज का आंसर करेगा, क्या है, या व्हाट वाज। ये सिर्फ यस और नो में जवाब देगा। ये क्या करेगा, ये तो आंसर देगा व्हाट इज का और व्हाट वाज का भी, लेकिन एक आंसर और देगा ये, और वो आंसर क्या होगा, वो होगा व्हाट शुड बी। व्हाट शुड बी मतलब क्या है, कि अंपायर क्या बोला, आउट या नॉट आउट। कोच क्या बोलेगा, ये तो बोलेगा ही आउट या नॉट आउट, लेकिन बुमराह को बोलेगा देखो बॉल तो थोड़ा तुम ऐसे करके मार दिए होते, घुमा दिए होते तो आउट था। जैसे बैट्समैन मारा, अंपायर बोलता है 6 या 4। कभी सुने हो कि अंपायर को ये बोलते हुए बैट्समैन को कि देखिए आप थोड़ा बैट्स को उठा दिए होते तो ये छक्का तो श्योर था एकदम, थोड़ा आप नीचे दबा दिए इसलिए 4 हो गया। ऐसा बोलता है कभी अंपायर? नहीं बोलता है, कोच ये बोलता है। तो मार्शल जो थे वो इकोनॉमिक्स को एक वेलफेयर इकोनॉमिक्स के रूप में जो एस्टैब्लिश करना चाहते थे, वो व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी या व्हाट आउट टू बी दोनों का जवाब देते थे। उनका इकोनॉमिक्स क्या है और क्या होना चाहिए, और रॉबिन्स का इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है से ही संबंधित है। क्या होना चाहिए उससे रॉबिन्सन इकोनॉमिक्स को कोई संबंध नहीं है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ओके,
तो हमने देखा कि तीन ब्रांचेज इकोनॉमिक्स के हैं। एक था हमारा वेल्थ अप्रोच, दूसरा हमारा वेलफेयर अप्रोच और तीसरा स्कैर्सिटी अप्रोच। और तीनों को क्रिटिसाइज किया गया कभी न कभी। तीनों को वेल्थ अप्रोच को क्रिटिसाइज किया गया कि आपने ज्यादा पैसे को तरजीह दे दिया, सिर्फ पैसे की बात करते हैं आप। वेलफेयर अप्रोच को क्रिटिसाइज किया गया कि आप जो है ये जो बोलते हैं कि सिर्फ नॉर्मल स्टडी को करें, बिहेवियर, सिर्फ इकोनॉमिक्स को करें, इकोनॉमिक स्टडी को करें, यानी सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम करें, सिर्फ नॉर्मल एक्टिविटीज का स्टडी करें, तो आप नैरो डाउन कर दे रहे हैं सब्जेक्ट मैटर को। ये किसने कहा? मार्शल ने कहा, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया। ओके, फिर रॉबिन्स का जो स्कैर्सिटी अप्रोच था, रॉबिन्स का स्कैर्सिटी अप्रोच जो था उसको क्रिटिसाइज किया गया कि भैया तुम तो वेलफेयर की बात ही नहीं करते हो। तो वो सब्जेक्ट जो वेलफेयर की बात ही नहीं करे, सब्जेक्ट जो वेलफेयर के बारे में चर्चा ही नहीं करे, उसको कोई पढ़ेगा क्या? उसको कोई पढ़ेगा ही नहीं, वो तो पॉपुलर होगा ही नहीं, तो इसीलिए ये भी डम। तो जब देखा कि भैया ये तीनों लोग बोला, तो एक इकोनॉमिस्ट थे, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट P.A. सैमुएल्सन, P.A. सैमुएल्सन, इन्होंने बड़ा अच्छा एक बीच का रास्ता निकाला। बोला तीनों को मिला दो और एक खिचड़ी बना दो और डिफाइन कर दो इकोनॉमिक्स को। इसीलिए इन्होंने कुछ मौलिक कंट्रीब्यूशन, जो एक बेसिक कंट्रीब्यूशन होता है, इकोनॉमिक्स को नहीं दिया। इन्होंने क्या किया? एडम स्मिथ, मार्शल और रॉबिन्स को समराइज कर दिया। इसीलिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा है, जो सैमुएल्सन का डेफिनेशन है उसके बारे में बड़ा अच्छा कहा है कि सैमुएल्सन्स डेफिनेशन इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। जैसे मान लो तुम्हारा बर्थडे हुआ, बहुत सारे गिफ्ट आए, और एक महीने के बाद तुम्हारे दोस्त का बर्थडे आया, तुम क्या किया? एक गिफ्ट निकाला अपना पुराना वाला, अपने बर्थडे का रैपर फाड़ा, नया रैपर लगाया, दोस्त को चिपका दिया गिफ्ट में, भाई हैप्पी बर्थडे। अब तो अभी तो खैर लोग कोरोना में तुम लोग बर्थडे पार्टी भी नहीं हो पाएगा, गिफ्ट भी नहीं मिलेगा, अभी कोई देगा भी तो भी नहीं लोगे। तो क्या हुआ कि आपने पुराने गिफ्ट के ऊपर नया रैपर लगा दिया। इसी तरह P.A. सैमुएल्सन में कहा गया कि दिस इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो कहा गया, इन्होंने क्या कहा इकोनॉमिक्स के बारे में? जानते हैं कि क्या इनका व्यू है? तो इनका कहना था कि इकोनॉमिक्स स्टडीज all such human behavior through which they put scarce economic resources, through which they put scarce economic resources to use to produce goods which have monetary value, and distribute them in the way that distributive justice is maintained। हट गया हूं, उसको लिखना है, वो पॉज करके लिख लेगा, वीडियो पॉज करके लिख लेगा। ओके, सफिशिएंट है। नाउ सी व्हाट है
पहला क्या कहा उन्होंने, ये स्टडी ऑल सच ह्यूमन बिहेवियर थ्रू विच दे पुट स्कैर्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज, स्कैर्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इसकी चर्चा किसने की थी ओरिजिनली, कि देयर आर ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल आर स्कैर्स, चर्चा किसने की थी, रॉबिन्स ने। तो रॉबिन्स को ले लिया, टू प्रोड्यूस गुड्स विच हैव मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि ऐसा सामान जिसका मॉनेटरी वैल्यू हो। तो वेल्थ की चर्चा किसने की थी, एडम स्मिथ ने भी और रॉबिन्स ने भी। ओके, और फिर उसको सामान जब बन जाएगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे, सो दैट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज मेंटेन्ड, जस्टिस हो रहा है सबके साथ। तो वेलफेयर की बात की तो मार्शल के वेलफेयर की बात भी इसमें आ गई। तो क्या देखें हम लोग कि इसमें रॉबिन्स भी आ गए, एडम स्मिथ भी आ गए, मार्शल भी आ गए, और इन्होंने इस तरह से इसको डिफाइन कर दिया इकोनॉमिक्स को। इसीलिए इसको चूंकि प्रोडक्शन की बात की तो ग्रोथ ओरिएंटेड नया सबको मिला के दिया था, इसीलिए इसको बोला गया कि भैया ये जो है सो एक मॉडर्न अप्रोच हो गया, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच हो गया। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा चर्चा इकोनॉमिक्स में एज सच नहीं की गई है, क्योंकि बोला गया कि ये जो है एक पुरानी चीज़ों को ही कहा गया है, कोई बेसिक चीज़ें नहीं दी गई हैं। सो हेयर दिस लेक्चर वी एंड। इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स वी विल डिस्कस, अभी हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक्स क्या है, तीन जो फेज इकोनॉमिक्स के थे, वेल्थ अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच एंड स्कैर्सिटी अप्रोच को हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, जो कि इस सिलेबस का पार्ट है कि व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नंबर वन। नंबर टू, इकोनॉमिक्स एज ए साइंस एंड आर्ट, इकोनॉमिक्स साइंस है या इकोनॉमिक्स आर्ट है, वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग इसमें कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जिससे क्वेश्चन आते हैं वो क्या है। हम लोग को उससे पहले पढ़ना होगा इकोनॉमी के बारे में, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज, आपने पढ़ा होगा 10th में, बट हेयर वी विल डू ए ब्रीफ कि डिफरेंट इकोनॉमीज क्या हैं, फिर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ तक हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर कंज्यूमर बिहेवियर। सो टिल देन गुड बाय एंड प्लीज वॉच और वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।